Electronic components. Have you heard about active and passive components? Say yes or no. Yes, Harman. Have you heard active and passive components? Okay. Now, first one is active components. What do you mean by active components? That are capable of providing and delivering the energy to the circuit of the system. Means used in electronic circuits are numerous, but all of the components can be broadly classified. First is like vacuum tube, transistor, diodes. These are all are active components. Transistor means that is used to amplify the circuit. So what is the purpose of active components that are capable of providing or delivering the energy to the circuit? जो सर्किट को एनर्जी डिलीवर कर रहा है. सेकेंड वन इज पैसिव कंपोनेंट्स. अब पैसिव कंपोनेंट्स क्या होंगे? दैट डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ energy or any type of external source for its operation. For example, we have resistance, inductance, capacitance. It does not require any external source for its operation and are capable of storing energy. ये खुद ही capable है for storing the energy in the form of voltage or current. These types of components, these are the basic components of electronic circuits or devices: resistance, capacitance, inductance, and these are the types of passive components. Passive component means are not capable of amplifying or processing any electrical circuit by themselves. So these components include resistance, inductance, capacitance. Now, can you tell me what do you mean by resistance, inductance, capacitance? I'm audible to all of you. Can you tell me? I have already described what you mean by active and what do you mean by passive components. Now, further, passive components are classified or divided into two categories. One, those type of passive components which dissipate energy, जो energy को dissipate करते हैं. Second type है which store it, which stores the energy. अब इन तीनों कंपोनेंट में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वो जो एनर्जी को डिसिपेट करता है और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. We have three types of passive components. Students, it's a two-way communication. You can also participate. Unmute yourself and tell me. Don't remain silent. Otherwise, मैं बोली जा रही हूँ, आप सुनो ना सुनो. Are you getting my point? कैपेसिटर शायद स्टोर करता है. कौन स्टोर करता है? कैपेसिटर. Capacitor. Yes, capacitor stores the energy, store the charge. Okay. Or what about resistance and inductance? Yes, Sushant. Yes, ma'am. Anji. Passive components are divided into two categories. One, जो energy dissipate करते हैं, and second, which stores the energy. Now we have three types of passive components. One is resistance, inductance, and capacitance. अब हरमन ने बोला कैपेसिटर क्या करता है? Stores the energy. जैसे हम बोलते हैं store the charge. What about resistance and inductance? ये dissipate करते हैं दोनों के store करते हैं. इनमें से कौन सा store करेगा, कौन सा dissipate करेगा? Yes. I'm waiting for your response, students.
Rest all students, you can also participate. Say yes or no. No one? मैम मैम Yes, Simran. मैं रजिस्टर मैम Okay, wait, Sushant. Yes, मैम रजिस्टर स्टोर करेगा. store करेगा. Okay, what about inductance? Yes, Simran. Okay, Sushant. मैम जो मैम रेजिस्टेंस है मैम डिसिपेट करेगा मैम इन द फॉर्म ऑफ हीट. Resistance dissipate the energy. Why? Because we already know resistance which opposes the flow of electric current. Yes जो मैम current को opposes the oppose flow. so the resistance dissipates the energy. Now tell me, what do you mean by inductance? Yes. What do you mean by inductance? मैं बताती हूँ फिर आप बताना. It stores or dissipate the energy. Inductance stores energy by virtue of a current passing through it. Suppose we have a wire or coil है. अब इसमें करंट, इसमें कैसे करंट पास करेगा? Like this. Yes. इस कर्व शेप में करंट पास कर रहा है तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है. इंडक्टर which stores the energy by virtue of a current passing through it. And third one is capacitor, which stores the energy by virtue of a voltage existing across it. हम बोलते हैं ये capacitor की two plates हैं. It's a positive, this one is negative, and voltage across this is V. जितना चार्ज होएगा उतनी आपकी वोल्टेज है. That is capacitor. So it's also stores the energy. Is that clear? What do you mean by resistance, inductance, and capacitance, and what is the difference between active and passive? Any doubt in this slide? Yes, friends. Say yes or no. Do you have any doubt in this slide? Not audible, Harman. No मैम. Okay. Next, resistance क्या है? I have already defined which oppose the flow of electric current through it. And second, basically resistance is used to limit the current, control the current. Control current को limit करने के लिए, or we can say divide the voltage in an electronic circuit. That's why resistance is used. You can note down the point. First is it is used to limit the current, limit the amount of current, or we can say it is used to divide the voltage in an electronic circuit. So the ability of a resistor to oppose the current is called resistance. Are you getting? Just a 2 marks question. What do you mean by resistance? What do you mean by resistor? What is the comparison between active and passive components? And most important one is what is the comparison between inductor and capacitor? Both are storing the energy. Then what is the main comparison between inductor and capacitor? Any one of you? Yes. Our next topic is resistance. You can note down the points also. I have already told you, used to limit the amount of current, or we can say it's divide the voltage. And the ability of a resistance to oppose the current is called resistance. And what are the units of resistance? That is ohm. तो ये आपका एक passive component हो गया. Next one is again resistance. Resistance के क्या क्या function है? Reduce the current flow, adjust the signal levels, divide the voltage,
वॉइस एक्टिव एलिमेंट्स। आपने ट्रांजिस्टर को वर्क कराना, डायोड को, आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, in all the cases we use resistance. And what is the theory of operation? Resistance की क्या theory है? That is based on Ohm's law. What is Ohm's law? V is equal to IR. It states that voltage across a resistance is directly proportional to the current. V is proportional to I. And V is equal to IR. What is R? That is called resistance. अब रेजिस्टेंस आपके सर्किट में सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो कैसे होएगा? इफ रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है, दिस इज अ सर्किट ऑफ सीरीज, you can see here three resistance are there, 1 2, it's visible to all of you? Yes Shishant, it's visible? Yes ma'am. Okay, fine. Three resistance are there. First is R1, second is R2, and third one is R3. Now all of the resistance are in series. अगर resistance series में हो तो total resistance is the sum of all. तो total क्या बनेगी? R1 plus R2, that is your second resistance, plus R3, that is third one. जब series में हो. When we are talking about parallel, ये parallel में है R1, R2, R3, then जो आपकी resistance होगी total reference resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये हमने 3 की बात करी. That is in parallel case. This is series. तो अगर 3 से ज्यादा हो तो अप टू सो ऑन. अगर 4 हो 1 plus 1 by R4. That is the difference between series and parallel. Now there are two types of resistance, fixed and variable. Fixed means whose value is standardized. आपने बोला आप resistance लेने जा रहे हो 1 किलो ओम की है. That is called fixed. जिसकी वैल्यू स्टैंडर्डाइज्ड है, स्पेसिफाइड है, ऑर्डिनरी डिफाइंड है, दैट इज कॉल्ड फिक्स रेजिस्टर. और जिनमें करंट फ्लो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, जो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, नॉट वेरिएबल. एंड व्हाट अबाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस, हुज वैल्यू कैन बी एडजस्टेड, चेंज, वेरिएबल है. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर? दैट इज पोटेंशियोमीटर. We can also use VDR, voltage dependent resistors. इसमें आपके resistance क्या है? Variable. That is the two types of resistance. One is fixed and second one is variable. You can note down the points. Then applications of resistance. Resistor कहाँ पे हम use कर सकते हैं? Frequency, high frequency instrument में use कर सकते हैं. Power control में. Suppose आपने एक power supply ही बनानी है, उसमें भी resistance का use होएगा. Because it's a basic component of electronic devices and circuits. Filter circuits में use होता है, amplification के लिए, oscillations के लिए, satellite communication, that is called telecommunication, wireless communication, digital multimeter. आपने multimeter, आपने देखा, आपने workshop training में multimeter देखा आपने? Yes. Yes ma'am. आपने BEE में भी देखा होगा कि आप मल्टीमीटर के थ्रू कैसे रेटिंग चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस की, वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हो. यस और नो? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. नेक्स्ट वन इज, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस दे दी, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, कि कितनी वैल्यू, कितने ओम की रेजिस्टेंस है. That depends on the color coding of the resistance. अब इसमें आपको कितने colors दिख रहे हैं? You can see here. First one is green. That is called first digit. How to check the color coding? कैसे check करें कि कितनी measurement है इसकी resistance की? That is called first digit. तो आपने इसे लेना है first digit. Please note down. Second color जो होगा, that is called second digit. Third is third digit.
अगर 3 कलर दिए हैं आपको स्टार्टिंग में, अगर 2 दिए हैं उसके बाद 2 और है, अगर टोटल 4 है then 2 are 2 digits. After this third one is multiplier and last one is your tolerance. Now here you can see 5 colors are there and there is a gap between these. अब इनमें जो गैप है that is called tolerance. टॉलरेंस की कितनी परसेंट टॉलरेंस है, कौन से कलर में टॉलरेंस आ रही है, वेदर इट्स गोल्ड और सिल्वर, दो ही होती है बेसिकली. थर्ड वन इज नो कलर. आई एम राइटिंग हियर गोल्ड. टॉलरेंस की बात करें, फर्स्ट इज गोल्ड, सेकंड इज सिल्वर एंड थर्ड होता है नो कलर. मैं उसे लिख रही हूँ एनसी. यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक. अगर आपका गोल्ड है देन टॉलरेंस इज plus minus 5%. If color is silver, then tolerance is 10%. No color means tolerance is 20%. That is called tolerance. अब ये जो फोर्थ वन है that is multiplier. मल्टीप्लायर मीन्स कि आपका जो कलर, जैसे ये रेड है तो रेड का जो मल्टीप्लायर होता है that is 10⁻². That is color coding of resistance. In next slide I will show you how to find out the value of the resistance. I'm again repeating. अगर यहाँ पे starting में first last two छोड़ के, this one is your tolerance, ये temperature बताता है, this one is multiplier. और अगर इसमें इस मल्टीप्लायर से आगे दो कलर्स हैं देन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट लेना है. इफ मोर देन 2 है देन उतने डिजिट्स हो जाएंगे. अब यहाँ पे 3 कलर्स आ रहे थे तो 3 डिजिट आ गए. दिस वन इज थर्ड डिजिट. That is a description of color coding. Now how to pick up the value of the resistance, how to check, see here, that is a resistance color coding or color table. फर्स्ट डिजिट. अब यहाँ पे देखो मैंने अभी बोला था लास्ट वन इज योर टॉलरेंस, देन सेकेंड लास्ट वन इज योर मल्टीप्लायर. तो उससे आगे कितने कलर्स हैं? यस टेल मी, हाउ मेनी कलर्स आर देयर? यस सुशांत. मैम यस. इस मल्टीप्लायर लास्ट वन इज योर टॉलरेंस कि गोल्ड है कि सिल्वर है कि नो कलर है. देन मल्टीप्लायर, उससे पहले कितने कलर्स आ रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ यू? मैम 99. 2 कलर्स. तो कितने डिजिट होंगे? फर्स्ट डिजिट देन सेकेंड डिजिट. नाउ हाउ टू पिक अप द वैल्यू, ये आपकी कलर कोडिंग पे डिपेंड करेगी. कलर कोडिंग में देखो यहाँ पे डिजिट 0 1 2 अप टू 9 लिखे हैं. सिमिलरली सेकेंड डिजिट में भी 0 to 9 लिखे हैं. अगर आपका सिग्निफिकेंट डिजिट 0 है, 0 मीन्स ब्लैक कलर. यू कैन सी हियर कलर भी यहाँ पे किया ब्लैक. देन दिस वन 1 मीन्स ब्राउन, it's brown. Then 2 means red. Please note down on your copy. First one is black. मैंने शॉर्ट में लिखा black, brown, red. Then orange. Fourth one is yellow. Fifth one is green. Then 6 is blue. And seventh digit means violet. Eighth is white. Sorry, eighth is gray. Ninth is white. It's gray. And last one is your white. Done? Have you noted? Yes, note down करिए students. Yes, ma'am. अब हम चेक करेंगे. अब मुझे ये कलर बताओ, कौन सा कलर है? हाँ जी, observe this figure. Tell me which color is this? मैम ब्लू. ब्लू. और ब्लू का फर्स्ट Blue. तो सिग्निफिकेंस डिजिट कितना है फर्स्ट के लिए?
सी हियर फर्स्ट डिजिट के लिए ब्लू के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट है 6, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6। अब सेकंड डिजिट का कलर चेक करो कौन सा है। 2 हाँ जी, चेक द सेकंड 2 मैम 2 बाय इट्स रेड। तो मैम 2 ये आपका आ गया फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड वन, दैट इज अ मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर में कलर कौन सा है आपका, ब्लैक। ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर नंबर कितना लिखना है आपने, 1 ये 1 कैसे बना, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, इट्स 10 रेज टू पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। इट्स 10 रेज टू पावर 1, इट्स 10 रेज टू पावर 2, इट्स 10 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन 10 रेज टू पावर 9 तक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम फर्स्ट ब्लैक कलर की बात करेंगे तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 0 दैट इज 1। तो 1 ओम के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने टॉलरेंस चेक करनी है कि टॉलरेंस किस कलर की है। ये टॉलरेंस या तो गोल्ड होगी या सिल्वर होगी। अभी हम अगर लेके चले कि ये गोल्ड है कलर, तो गोल्ड के लिए मैंने आपको टॉलरेंस कितनी बोली थी, यस, प्लस माइनस 5%। अगर ये यहाँ पे सिल्वर होता तो प्लस 5% माइनस 10%, अगर नो कलर होता तो प्लस माइनस 20%। Is that clear how to find out the value of a resistance through color coding? यस You have मैम to just learn these colors in order: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Then gold. After white, gold. Then silver. And last one is no color. Done? Now any doubt in this slide? Yes. Yes, please respond, students. I'm waiting. नो मैम दूं फिर क्वेश्चन आपको? यस मैम Okay, write down. Yes, ma'am. You have to find out the value of the resistance. I am drawing here. यहाँ इसमें one है, that is 2. मैं कलर लिखूंगी 3 and that is 4. You have to find out the value of the resistance. ये है आपका first digit whose color is yellow. Done? ये first digit है जिसका कलर कौन सा है, yes. Yes, students, I'm waiting. Please respond. कौन से कलर का फर्स्ट डिजिट बोला मैंने, Yellow. येलो। मैम येलो ये सेकंड डिजिट है whose color is violet. Third is your multiplier. मल्टीप्लायर का कलर है ऑरेंज। And last one is your tolerance whose color is silver. You have to tell me the value of the resistance. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस 47 into 10 raised to power 3 plus minus हाँ जी, 10%. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10%. यस, फर्स्ट कलर है येलो, तो येलो का कितना डिजिट आएगा, 4. डन। सेकंड डिजिट इज वायलेट। वायलेट का कलर कितना है, नंबर सॉरी 7. Ma'am, 7. 7. थर्ड इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कलर इज ऑरेंज, तो कितना आएगा मल्टीप्लायर, 1. 100 ohm. चेक करो यहाँ पे 10 raised ऑरेंज power कहाँ पे है, 2. दैट इज 1 किलो ओम, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3। चाहे आप 10 रेज़ टू पावर 3 लिख लो, चाहे 10 किलो ओम लिख लो, both are same. Kilo means 10 raised to power 3. Clear है Sushant? Yes, ma'am. Now Ma'am, what about Yes, tolerance? Yes, friends, tell me, tolerance is Ma'am. silver.
plus minus 10%. Plus minus 10. 10%. This is all about color coding of a resistance. If you have any question in this, then you can ask me. Aditya and Harman. No? तो इसमें आपने पहले बैंड देखने हैं कौन कौन से कलर का बैंड है. फर्स्ट एंड सेकंड बैंड रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट डिजिट. फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट क्या आएगा, थर्ड बैंड कलर बैंड जो थर्ड है वो मल्टीप्लायर बताएगा, एंड लास्ट वन इज योर टॉलरेंस. ओके, Tolerance. हाँ जी, Yes, ma'am. ये रहा. क्लियर है? I will share this PPT and notes after the lecture. अगर कोई doubt है, you can ask me. Ohm's law we have already discussed. In terms of current, that is V upon R. In terms of voltage, it's I into R. Resistance V upon I. Then power. Power क्या है? Power is unit of power is a watt. Power means आपने कितना काम किया with respect to time. सपोज मैं कह रही हूँ 1 आवर में आपने इतना टास्क कंप्लीट करना, देन पावर क्या होगी कि आप वो टास्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो. मेरा टारगेट था 1 आवर में कंप्लीट करना, बट आपने वो अचीव किया कि नहीं. दैट मीन्स हाउ मच वर्क इज अचीव्ड ओवर टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर. एंड व्हाट इज पावर हियर? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. Voltage unit is volts and current unit is ampere. Power is equal to V into I. And when we put the value of V here, that is I into R into I, then formula बन जाएगा I square R. Done? Yes. I'm waiting. Yes, sir. Okay. Next, we all know the value of I as V upon R. अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला V इंटू आई में I की वैल्यू पुट कर दूं V अपॉन R, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू V अपॉन R, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. दैट इज थर्ड वन. This is all about power and the formula of power and what are the units of power, that is volt. You can also write down volt, ampere. Volt is the unit of voltage and ampere current के units. Next is capacitor. Capacitor that stores the charge, stores the energy. अब capacitor है क्या? See here, there are different types of capacitors are there. तो capacitor क्या है? That is capable of storing the energy. कैसे? जितनी ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस एग्जिस्ट करेगी उतनी ही आपकी एनर्जी स्टोर होगी. आप बोलते हो कि कैपेसिटर मेरा चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, दैट इज कैपेसिटर स्टोर्स द चार्ज. कैसे? द वोल्टेज अप्लाइड, सपोज दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, सो द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, मैंने इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज योर वोल्टेज. ये भी वोल्टेज का काम कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप कर देगी, and the energy is stored in the electric field, that is called capacitor. And capacitor basically used to store the electrons, that is called movement of electrons, and release them. जब वो कैपेसिटर चार्ज कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे हैं, जब वो डिस्चार्ज कर रहा है दैट मींस वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. So the capacity of a capacitor to store charge per unit potential difference is called capacitance. And what is the formula of capacitance? Xc is equal to, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/2/Fc. Yes or no? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उतनी कम होगी, बिकॉज कैपेसिटिव रेक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो लो इम्पीडेंस देता है एसी सर्किट्स में, अगर हम एसी सर्किट्स में बात करें, बट वेरी हाई इम्पीडेंस
to DC circuit. AC is your alternating current, DC is your direct current. तो फंक्शन क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर is used to block the DC but pass the AC signal. आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक द DC एंड पास द AC. दैट्स व्हाई कहाँ यूज होता है कैपेसिटर का? कपलिंग के लिए, बाईपासिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए. इन पावर सप्लाई सर्किट वी यूज कैपेसिटर टू फिल्टर अप द लो पास फिल्टर का काम करता है. सी हियर, दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर. दिस वन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. Negative terminal is your cathode and positive terminal is anode. चार्ज स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है. यूनिट्स क्या होते हैं? फैराड. व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द एप्लीकेशन की कपलिंग के लिए यूज होता है. कपलिंग के लिए एसी कंपोनेंट को क्या करेगा? ब्लॉक कर, सॉरी डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा. सी हियर, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये कंपोनेंट है दैट इज एसी प्लस डीसी. दिस वन इज योर एसी जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है साइन की. दिस इज डीसी कंपोनेंट. जब इसे कैपेसिटर में से पास करोगे तो जो डीसी कंपोनेंट है, ये जैसे मेरा ग्राफ है, दिस वन इज योर एसी कंपोनेंट, दिस वन इज डीसी. तो वो डीसी को रिमूव कर रहा है और जो आपका एसी कंपोनेंट है सिर्फ वही पास हो रहा है आफ्टर capacitor when we pass through it through a capacitor. These are the applications or utilization of capacitor. Decoupling के लिए भी यूज कर सकते हैं. Decoupling means कि मेरा कोई सिग्नल है उसमें से नॉइज को रिमूव करना, डीकपल करना. ये आप देख सकते हो, ये आपका सिग्नल है, इट्स अ नॉइसी. यूज्ड टू पास नॉइज कमिंग इन फ्रॉम द पावर सोर्स टू द ग्राउंड टर्मिनल. तो उसमें से नॉइज को हमने डीकपल कर दिया. स्मूथिंग के लिए कांस्टेंट एक लेवल करना वोल्टेज का, कि जो मेरी आउटपुट है वो नॉइज फ्री हो, रिपल्स ना हो. रेक्टिफायर्स में बेसिकली यूज करेंगे इसे जब हम पावर सप्लाई सर्किट पढ़ेंगे. सी हियर, दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर दैट इज ब्रिज रेक्टिफायर. आफ्टर दिस कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्मूथ द आउटपुट, वोल्टेज लेवल कांस्टेंट करने के लिए. दिस इज the use of capacitor for smoothing. Next one is inductor. अब inductor क्या है? That also stores the energy but it's different from capacitor. Why? Because इसमें क्या होएगा? करंट जब फ्लो करेगा थ्रू अ कॉइल, जैसे ये है, मैंने बनाई भी थी आपको एग्जांपल में कि जस्ट लाइक अ वायर. ये वायर है, कॉइल है, वही ये चीज है. जब इसमें करंट पास करेगा तो एक स्टोर करेगा एनर्जी को. And inductor is a circuit component which opposes the change of current flowing through it and induces a voltage when the current flow through it varies in magnitude and direction. So it resists changes in electric current passing through it. Capacitor आपका DC को block करता था, AC को pass करता था, but inductor blocks the AC but pass the DC signal. That is the difference between inductor and capacitor. You can note down, inductor pass the DC but blocks the AC, but capacitor blocks the DC and passes the AC circuit. Done? If you have any question up to this point, then tell me. These are just the basic of electronic devices. After this, we will continue from first unit, that is एनर्जी बैंड डायग्राम. हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम से. हैव यू हर्ड अबाउट सेमीकंडक्टर? दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स. सुना है आपने?